Let us start this session on sentence correction. Sentence correction का और एक session शुरू करते हैं. Join me quickly. Yes. कितने लोग हो? देखो जरा. Okay. So let us start. Okay. The first sentence correction part 2 का ये session है. Okay. Let's come to the first one. Richa beta, good afternoon. Good afternoon. Okay. Now to the first one. What is the error in this sentence? Stammering. ठीक है. इसमें बताना. Stammering is a habit linked to lack of self-confidence. Linked to बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताना. Sangam and Lakshmi Shri, good afternoon, beta. Tell me, stammering is a habit linked with, very good. It's a stammering, it's a habit linked with lack of self-confidence. Good. Now to the next question. बहुत बढ़िया. Somebody must be made to answer for the alleged security scam. बताना. Somebody must be made answerable for somebody must be made to answer for the alleged security scam. क्या होना चाहिए? दीक्षा बेटा, good afternoon. A. ठीक से पढ़ना. Somebody must be made to answer for. Absolutely, the answer is D, बेटा दीक्षा. ठीक है. And Richa and Lakshmi, you're right. Sanskriti also. It is answer for something. Okay. And what is alleged? Alleged का मतलब क्या है? Blamed. But then we really do not know. Alleged is blamed with or without proof. We really do not know whether this is the case or not. It has not been proved. It has just been blamed. Okay. So somebody must be made to answer for the alleged security scam. Okay. Now to the next question. D. No correction required. Answer 4 is correct. Okay. Now to the next one. 2 children were knocked out by a speeding truck. Knocked out. Okay. Knocked out or knocked down. Or it's okay. What is the answer to this? This doesn't work fast. My computer sometimes gives me a lot of trouble. Okay, just wait for a second. It is knocked down. Very good. The answer is knocked down. Very nice. Knocked down is to make somebody fall, to strike to the ground as if with a blow. Now see, the problem with this particular phrasal verb is we can actually go with इसको पढ़ सकते हैं, एकदम पढ़ सकते हो बेटा. होटल मैनेजमेंट के लिए है ही रचित, पढ़ना ही चाहिए. आओ. अच्छा. 2 children were knocked out by a speeding truck. अब knocked out का मतलब unconscious होना. Okay. Knocked out as in this one, as in punching. ठीक है. बॉक्सिंग में जैसे होता है knock down. ठीक है. तो knock down भी हो सकता था. There was no big trouble. They were made unconscious. वो तो हो ही सकता है. But then knock down is a much better one. Making somebody fall to the ground. Making somebody fall to the ground. So knocked down by the speeding truck. Very good. And knocked at का मतलब क्या है? किसी में ठक ठक करना. And knocked upon का मतलब to try to meet somebody. Knocked upon is to meet somebody. Okay. And knocked off, complete. Knocked off, to finish a task. Knock off is to finish a task. Okay. To next one. I met your sister at the party. She asked for you. I met your sister at the party. She asked for you.
बताना क्या होना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट दिस। हाँ मैडम देखो, एक चीज बताना दीक्षा, रचित, ठीक है, खुशी वगैरह, ये बताना मैडम, व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम, इंग्लिश तो इंग्लिश ही है ना, और बीबीए होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लिखा हुआ है, इट्स ऑन द लेवल दैट बीबीए एंड होटल मैनेजमेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड, चलिए आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आस्क्ड फॉर यू, आस्क्ड आफ्टर यू, क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, ये मैं तुम्हारी बहन से मिला, वो तुमसे मिलने के लिए कही, she wants to meet you, I met your sister, she asked for you, I met your sister, मैंने तुम्हारी बहन से मिला और तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई, दोनों तो एक ही बहनें हैं, एक ही घर में हैं, तो she asked for you का मतलब उससे बात करना है मुझे, ठीक है। what will be a better way of writing this, because we don't have a lot of information here, ठीक है। तो this is much better to ask about somebody's health, asked after you, I met your sister at the party, she asked for you, it seems as if this guy, okay, the person who is saying I, okay, जैसे सोचो रवि, and say maybe Suresh, okay, and he says I met your sister and she asked after you, that makes a better sense, maybe Suresh has not come to the party, okay, the brother has not come to the party, so I think B is much better. This is not wrong per se, गलत तो नहीं है, I met your sister at the party, she asked for you, जब आया ही है, एक ही घर के लोग हैं, if they are from the same house, so why should she ask for you, okay, and why should she ask you about her brother or sister, okay, so asked after is better, asked after का मतलब है health के बारे में विचार करना, health के बारे में पूछना कि how is she doing, or how is he doing, my brother, how is he doing, you have come to the party, well, how is my brother doing, asked after you, okay. Asked upon has got no meaning, asked on has got no meaning, both of them have got no meaning. Good afternoon पुष्पेश बेटा, okay, तो याद रखना, हाँ, खुशी, दीक्षा, गीतिका, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, गीतिका you have not been coming to the classes, क्या हुआ, अच्छा, फिर before Sabita could reply back, the phone interrupted. What do you think is the answer? Before Sabita could reply back, the phone interrupted. It may be possible that, संगम बेटा एक सबसे पहली बात समझो, a sentence is decided upon, a sentence is decided on the basis of the information in the sentence. एक चीज सोचना सबके लिए है, okay, all of you pay attention to this, you and will, how are you doing बेटा गीतिका now, okay, सुनो कैसे बता रहा हूं, I can hear with my eyes, is this sentence correct? संगम asked a very good question, sir, हो तो सकता था, पिछले वाले क्वेश्चन में हो तो सकता था कि अपनी बहन के बारे में ही, अपने भाई के बारे में ही पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है जो कि मैं बाहर का हूं, but still she is asking, possible तो है ना, answer this and I'll explain it to you, I'll explain how we decide whether a sentence has to be corrected or it has not to be corrected, okay. I can hear with my eyes, you will say the sentence is wrong, why? Because you are using common sense and the information in the sentence. Here is not done with eyes, and we don't know whom we are talking about, we really don't know, is it human beings or somebody acting like a human being, we do not know, it's possible there is some animal which can actually use its eyes to hear, I think snake does it, snake catches the vibration with its eyes or something like that, I don't remember, okay. Now the problem is, what are you thinking with the limited information you have, with the limited information, जितना information इसमें है, तुम आई को सोच रहे हो कि सर ह्यूमन है, आई को सोच रहे हो कि ह्यूमन है ना, आई को सोच रहे हो कि ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए यू से द सेंटेंस इज रॉन्ग, एंड आई विल completely agree with you, simply because with the information I have, I do not know, normally sentences are used for human beings, not for something which does not speak, ठीक है, तो ये सेंटेंस तो गलत है,
क्योंकि कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है. ग्रामर इज ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ग्रामर, there is no problem in the grammar. Okay, the spelling is correct, the way of writing the sentence is correct, there is no problem here. Very good. The sentence is not logical. The same sentence, when I write it like this will be correct. I can hear with my eyes as God has endowed me with it, with the gift. God has endowed me with this ability. Now you will not question it. Now you will say that the sentence is correct because of this. God has endowed me with this ability. If God has done it, I can't do anything about it. Okay, so the sentence is correct. So what we do is read the sentence, understand whether it requires, first of all, use logic with the information we have. We cannot bring outside information, mind you. Always keep this in mind. A sentence may not, you cannot tell me, sir, what if I take this information? What if I take that information? I have not given you the information. You just need to stick to what is given in the sentence. Finished. जो sentence में लिखा है उसके आगे पीछे नहीं सोचना, जितना है उसी पे बात ही करना. आई बात समझ में? इसीलिए वो सेंटेंस गलत था. तो यहाँ पर मैं इसीलिए वो पिछले वाला सेंटेंस संगम बेटा, दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यू सी, इसमें देखना, इसमें तुमको सोचना पड़ेगा. दिस लुक्स इलॉजिकल. मेरी बहन पार्टी में आया हो, ठीक है, और पार्टी में तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में पूछे, मुझसे पूछे, तुम्हारे बारे में पूछे कि वो कहाँ है, मुझसे पूछे, ये इसके लिए तो मेरे को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए. लेकिन अगर जरा से उसको सोचना, जैसे ऐसे सोचो 49 और 51% पे आस्ट आफ्टर लिखे वो तो काम कर जाएगा. उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो ज्यादा लॉजिकल लगता है. आई सेड द सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग. आई सेड मोर लॉजिकल विल बी दिस, क्योंकि पार्टी में आए हो, तो जब पार्टी से दोनों एक ही घर से आया हो तो तुम्हारे बारे में क्यों, मुझसे क्यों पूछने लगी? जब तक बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, बहुत भीड़ था, कहीं चला गया, ये सब इंफॉर्मेशन होता तो बात हो सकती थी. ठीक है, सो ऑलवेज यूज लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल. अ सेंटेंस हैज टू बी लॉजिकली करेक्ट. From the previous question, what does knock at? Knock at doors? Knock upon? Knock upon का मतलब है to wait, let me tell you. I'm a little confused with knock upon. Knock at is knocking at the door or rapping something. Okay? I said something for knock upon. Knock at and knock upon my door. I think both of them are correct. Knock upon is, I think, slightly different. Oh, knock upon or knock on will actually mean making things happen. Making things happen. Okay? Knock on or knock upon will mean petrol prices could have a knock-on effect. One knocks the other. And cascading effect आने के लिए बोल सकते हैं, knock on. Okay? And knock at the door, rapping the door. प्रथम आए, इतना मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? आए और तुरंत. Okay बेटा. So let's start the next one. Okay? Be careful. Okay, now reply back. This is reply. Reply back is redundant, right? Reply means to answer back. Okay? To talk back. Okay. Then your bonus will depend on the quality of your work. What is this? Your bonus will depend on the quality of your work. Depends on. Very good. Your very good. Your bonus will depend on. Is dependable? No, Gitika. Your bonus depends on the quality of your work. B. Very good. Depends on or upon. We can write both. On or upon, both are correct. Okay. Now to the next question. Which of the parts will make the sentence? Like yesterday we were doing, there will be some parts given. Okay, this part is given. Now this is wrong.
एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम द 3 ऑप्शंस, ऐसा ऑप्शंस जो कि इसको सही कर देगा. मोर देन वन इज पॉसिबल, more than one is possible. So which one is the correct answer? But scientists are increasing concerned about a new virus that is spreading in Asia. इसमें क्या होना चाहिए? Lakshmi says only one. And what about YouTubers? आप लोग बताना. समीर, दीक्षा, गीतिका, tell me, like scientists are increasing concern. Which one? It is both 1 and 3. No, Samir. Do you know the meaning of conceited? Meaning तो नहीं पता है. तो meaning नहीं पता है तो क्यों तुक्का मार रहे हो? कहीं गड़बड़ ना हो जाए. Only A, only one is correct. Very good. Now this is, नहीं जानो तो मत तुक्का मारना. क्यों रिस्क लोगे? कहीं गड़बड़ हो गया तो. Increasingly concerned. Now why do we have to write increasingly? Very good. Self pride, conceited का मतलब है खुद के बारे में बहुत arrogant होना, अपने बारे में बहुत लंबा चौड़ा सोचना. ठीक है. प्राइड, ठीक है, प्राइड होना, बहुत घमंड होना, अपने को ही सबसे सर्वा समझना, उसको हम लोग बोलते हैं conceited होना. Increasingly concerned. Okay. Why do you write increasingly, sir? क्योंकि कंसर्न्ड जो है वो वर्ब है या एडजेक्टिव है. ये वर्ब है या एडजेक्टिव है. ठीक है सर, वर्ब ही एडजेक्टिव का काम कर रहा है, याद रखना. कंसर्न्ड इटसेल्फ इज वर्किंग लाइक एन वर्ब. ओके. एंड दिस, व्हेन यू टॉक अबाउट द एडजेक्टिव और द वर्ब, यू रिक्वायर एन एडवर्ब, नॉट अ वर्ब. सो इंक्रीजिंगली लिखूंगा तो दिस विल बिकम एन एडवर्ब. दैट्स ऑल. ठीक है, इसीलिए इंक्रीजिंगली लिखना पड़ेगा. ठीक है. Tell me this. This has been increasingly questioned. This part has to be changed. कौन सा चेंज कर सकता है बताना. इसमें किस को लगा दूं तो चेंज हो सकता है. एकदम दीक्षा, एकदम सही कहा. वर्ब के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है. वेरी नाइस. द पब्लिक हैज बीन इंक्रीजिंगली क्वेश्चन द साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्चर्स वर्किंग ऑन आउटब्रेक्स. Both 1 had and 3. एक बार और सोचना. डी सही है या only 1? जरा एक बार सोचना उसमें. When you write the past tense, the sentence is correct, but had increasingly questioned, not now. Doesn't seem like that. ठीक है. किया था ऐसे नहीं लग रहा है कि सर अभी भी करते हैं. द सेंटेंस सीम्स टू बी बेटर कास्ट इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है. तो ठीक है, इट वाज नॉट रॉन्ग इफ यू वर थिंकिंग अबाउट दिस आल्सो. दिस कुड हैव वर्कड. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? द सेंटेंस सीम्स टू बी सेट इन द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मेक्स मोर सेंस. किया था वो भी परफेक्ट टेंस लिख रहा हो. Had increasingly questioned, past perfect tense लिखा, तो आगे क्या हुआ क्लियर नहीं है. आगे क्या हुआ? Had research, उन्होंने बहुत क्वेश्चन किया था लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ, आगे वो नहीं. तो the best sentence is A, have increasingly questioned. But then there is one question, there is one more question. पब्लिक सिंगुलर है या प्लूरल है? हैज बीन होना चाहिए ना. हैव बीन कैसे लिख दिया सर आपने? ये इसका बताना. ऐसा तो इसमें भी एक प्रॉब्लम होनी चाहिए. This should not be has been increasing. have तो नहीं होना चाहिए, has ही होना चाहिए था. और what makes you think that have भी सही है सर या have ही सही है? हाँ, हमेशा पब्लिक को प्लूरल के तरह ही देखा जाता है. Public is never considered singular. The word is always considered plural. So we say the public have been. The public has been नहीं बोलते, the public have been. Okay, it's not like that, beta. It's not because of that, Richa. Okay, some words in English are always treated as plurals. Okay, some of them like police, हमेशा plural है. It's not Hindi. Police has मत बोल देना. ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में देखोगे police has लिखा हुआ है. न्यूज़पेपर में गलतियां हो जाती हैं. ठीक है.
Is it good to answer the questions mostly in present tense? No, Pushpesh. See, the thing is, you read the sentence, try to understand it. पढ़ के सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, देखो किस टेंस में बेहतर काम करेगा, ऐसा। ठीक है, पुलिस, कैटल, याद रखना कैटल का प्लूरल कभी कैटल्स नहीं होता, पुलिस का प्लूरल पुलिसेस नहीं होता, जेंट्री का प्लूरल जेंट्रीज नहीं होता, ठीक है, पोल्ट्री का प्लूरल पोल्ट्रीज नहीं होता। लेकिन इन सब के साथ लिखना तो आपको, जैसे पब्लिक, इनके साथ में आपको लिखना तो प्लूरल वर्ब ही है। यू कैन नॉट राइट द सिंगुलर वर्ब एट ऑल, ये याद रखना। शीप तो दोनों हो सकता है पुष्पेश, शीप का तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों शीप ही है। I saw one sheep, I saw two sheep. Here, these are always considered plural. These are collective nouns, always considered plural. Be careful. ठीक है, तो the public have increasingly questioned, इसलिए। ठीक है, the have is present continuous? No, not at all. ओ अच्छा, प्रथम, कल आप क्लास में आए थे लेकिन यू रैन अवे, यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चंस। यस्टरडे आई वाज टीचिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंसेस एंड यू डिड नॉट स्टे इन द क्लास। ठीक है, मैंने उतना बोला बेटा बात करो, पूछो, कोई पूछा ही नहीं, और तुम भी थे, मतलब मेरे को नाम याद आ रहा है। ठीक है, यू डिड, पीपल डोंट आस्क, एंड यस्टरडे आई वाज टीचिंग यू हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस। मैं क्या करूं बताओ, और तुम हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो, गलत है। और इतना आसान है, मैंने चुटकी बजा तो तुम क्वेश्चन ये टेंस पहचान लो, तो डोंट लीव देम। एंड दीक्षा, देयर इज वन मोर क्वेश्चन बेटा, मैंने योर दिस वन नाउ लिसन। हेयर, याद रखना, हेयर इज नॉट मैंने, इट्स नॉट एज इफ हेयर का प्लूरल हेयर्स नहीं होता, हेयर का प्लूरल होता है हेयर्स, बट वी ऑल्सो टॉक अबाउट हेयर एज अ सिंगल यूनिट, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर एस हेयर्स। याद रखना, कई लोगों को इन सब में डाउट हो जाता है, हेयर्स कैसे हो सकता है सर? होता तो है, हिंदी सुन लो। बालों की देखभाल के लिए कि बाल की देखभाल के लिए? बालों की देखभाल के लिए इंग्लिश भी मानता है हेयर्स भी। आई फाउंड 2 hairs in my tea, I found 2 hairs in my tea, absolutely fine. Okay, your hair is black, this is also fine. Keep all these things in mind, these are very very important. ठीक है बेटा, ये हुआ तुम्हारा किसका क्वेश्चन था, ये दीक्षा का। सीजर्स, हाँ अच्छा, एक सीजर, एक और बड़ा अच्छा वर्ड लिखा उसने, दीक्षा ने लिखा सीजर्स। याद रखना, कभी भी सीजर नहीं हो सकता, ठीक है, सीजर्स, ट्राउजर्स, ये सब प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक को पब्लिक्स नहीं लिख सकता, इसमें एस नहीं आएगा, प्लूरल है, इसमें एस आएगा, प्लूरल है, इसको कभी बिना एस को हटा के नहीं लिखना है। सीजर नहीं लिखना है, ट्राउजर नहीं लिखना है, प्लायर नहीं लिखना है, यू हैव टू ऑलवेज राइट इट एज प्लायर्स। टोंग नहीं लिखना है, टोंग्स ही लिखना पड़ेगा। यस पुष्पेश बेटा, प्लीज आस्क, ठीक है, क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक द प्लूरल वर्ब, सम विद एस एंड सम विदाउट एस, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है बेटा, बहुत सही, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट वन, अब इसमें आते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ, now if you are preparing for BBA Hotel Management Entrance Examinations, it is important the enrollments are on. Start a free trial for IPMAT. Okay बेटा, जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी। Okay, now please do subscribe to this channel, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। मेरा ही क्लास नहीं, और भी सर्च के क्लासेस होते हैं, सर्विस एप्टीट्यूड का, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, ये सब तो आता है होटल मैनेजमेंट में, BBA के GS क्वेश्चन। सो प्लीज subscribe to this channel, it is very important. Okay, now ये फिर देखना, an era is indetermined by the number of years it may comprise of. इसमें क्या होना चाहिए? An era always in a pair, of course, सही कहा, they are always in a pair। लेकिन जानता हो, एक प्रथम and all everybody सुनना, I encountered a question in one of my classes and I was left without a word, ठीक है, एक भी शब्द नहीं बचा। बच्चे ने पूछा, देखना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ट्राउजर्स में 2 पैर होते हैं, ठीक है, सीजर्स में भी 2 कैंचियां होते हैं, दो काटने वाली होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, चलो उसको भी मैं मान गया, लेकिन आप जो टी शर्ट पहने हो इसमें भी तो 2 हाथ है, उसका क्या करोगे?
तो शर्ट्स बोलना चाहिए, टी शर्ट्स बोलना चाहिए। एक आपने पहना है, पैंट तो आप बोलते हो पैंट्स, शर्ट को शर्ट्स नहीं बोल सकते बिकॉज यू हैव गॉट 2 हैंड्स, इसमें भी तो पैर है। आई वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, मैं बोला भैया भैया राम राम भैया, तुमसे मैं जवाब नहीं होगा, ऐसा ही है तो ऐसा है भैया, जाओ मुझसे मत पूछो। ठीक है, सो ठीक है, वी गेट वेरी नाइस क्वेश्चंस। बच्चे तो उसका दिमाग चल गया, पूछ गया तो मैं बोला अरे बाप रे बाप, जानो भैया जो जो सही है करो। ठीक है, अच्छा, एन विच वन डू यू थिंक इज एन एरा इज अनडिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, इनडिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, क्या होना चाहिए बताना। Okay, an era is undetermined by the number of years it may comprise of. Very good. Okay, very good. It is A. बहुत बढ़िया। एरा का मतलब क्या है? युग। युग को बोलते हैं हिंदी में, युग माने बहुत लंबा समय, उसको एरा बोलते हैं। जिस समय कोई कल्चरल या कोई बोलते हैं क्या, कल्चरल और रिलीजियस कोई मूवमेंट हुआ हो, उसको बोलते हैं एरा। ठीक है, बट देन वी कैन नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बोल सकता। 100 साल को युग बोलेंगे, द एरा ऑफ अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अब भाई उसको 50 साल के लिए बोलोगे, 20 ईयर्स के लिए बोलोगे, इट्स नहीं बेटा पुष्पेश, ऐसा नहीं है। युग एन एरा इज अनडिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इट में कंप्राइज ऑफ। ठीक है, ऐसा है। इसीलिए टीस भी बोल लेते हैं। अच्छा, मे बी गॉड नोस, नहीं पता बेटा दीक्षा, मैंने ना देखो, एक जगह के बाद इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस समय बोले भैया यू डू योर ओन रिसर्च। मैं सबके लिए रिसर्च करने लगूंगा तो रात का नींद नहीं हो पाएगा फिर मेरे से। इनडिटरमाइंड, अच्छा, वी डोंट से इनडिटरमिनेट, वी से, ठीक है, देयर इज, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द वर्ब फॉर्म। इनडिटरमाइंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द वर्ब फॉर्म, याद रखना। इनडिटरमिनेट बोल सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में लिख सकता हूं, बट नॉट एज अ वर्ब। बट देन अनडिटरमाइंड, यस इट्स अ वर्ब। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ और एक बार देखते हैं इसको। नो लेस देन 12 कंट्रीज साइन द न्यू अग्रीमेंट। नो लेस देन 12 कंट्रीज साइन द न्यू अग्रीमेंट। बताना इसमें क्या होगा, देखता हूं कितने लोग कर पाते हो। नो पुष्पेश, 10th is A, नो संस्कृति। B, युवराज सेज नो लेस देन, वो तो वही लिखा हुआ है, और देन का स्पेलिंग गड़बड़। वेरी गुड संस्कृति, चेंज द आंसर। Pushpesh also changed the answer. Very good. Sameer, very good beta. Pratham, wrong. The answer is no fewer than. Let's understand the difference. Let's understand the difference. Few बोलते हैं ना, then this is always for countable nouns. जो few जब भी लिखोगे, whether you write few or a few or the few, you always follow it up with a plural noun. Few, a few, the few बोलोगे, it is always plural nouns because they denote countable nouns. Whereas less जब बोलता हूं, this denotes quantity, not number. Okay, one of the confusing words. Less is for quantity. जैसे पानी, okay, it rained less than yesterday. It rained less than yesterday because you are not counting 1, 2, 3, 4 नहीं कर रहा हूं, कम होना। okay, so less, and less is the comparative degree for little, right? Little, less and least। ठीक है, तो याद रखना few जब भी बोलेंगे, we are talking about countries, therefore this must be no fewer than, no fewer than। D is correct। okay, but then there is one more issue। so चलो ये भी समझ गया। what about this? Is this wrong? No, lesser। do we write lesser or less is the, देखो, little, look at this, less, least। okay, now where is the lesser word? The comparative degree is less, so where is the lesser word? Yes, we can use less or lesser
but there will be a difference, slight difference. Lesser is talked about as if in inferior quality. याद रखना, lesser अगर बोलता हूँ, नहीं, less is also comparative degree. Lakshmi Shri, this is also comparative degree in quantity. Lesser is quality. Lesser quality. Okay, this is a lesser silk. This is a lesser silk. I am not talking about the quantity. I am talking about the quality. It is inferior silk. I am telling you. आया समझ में? बात आई समझ में? There are many different things. See, few is always plural. Few, fewer, fewest, always plural. Okay, no issues. But when you come to little, we can have two comparative degrees, less and lesser. Lesser is for showing inferior quality, whereas less is for quantity. Keep this in mind. Not everybody. No lesser than her brother. Very good, Diksha. No lesser than her brother in sports. Very good. So here we are not talking about quantity. See, Diksha wrote a sentence. Okay, let me write that on the board because she's on YouTube. Okay, she says, no lesser than her brother in sports. Now that is absolutely fine because we are talking about quality. This is a type of countable and uncountable. Yes, guys, less में ही दो है, less में ही एक है, uncountable quantity को दिखाता हुआ, ये quality को दिखाता हुआ, ठीक है? So many things. Okay. Now come to the 11th question now. Routing or jailbreaking is a process where the the user removes restrictions to overcome the limits set by manufacturers on their OS. OS is operating system. You know that. I don't need to tell you. आजकल के लड़के हो. C, okay. Yes, yes, I've gotten one answer from Pushpesh till now. Richa says D, both 2 and 3. Only 3, Lakshmi Sri. Very good. It is only 3. See, questions how कितना जबरदस्त क्वेश्चन चेंज कर जाते हैं. What is the difference between limit and limitations? ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या है? इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता. इससे आगे बने something that constrains you. It stops you from doing something. ये तो रोक देने वाला है, ठीक है, अड़ंगा है, obstruction है. This is an obstruction or a hindrance. Or a hindrance, whereas a limit is the boundary. This is in physical terms. ये तो सीमा है, ठीक है. लिमिटेशन क्या करता है? आपको रोकता है, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हिंडर करता है. सो देयर इज ओनली वन आंसर. लिमिटेशन ही वो लगा के रखता है ना कि भाई इससे आगे आप नहीं कर सकते. A type of hindrance. Therefore there is only one answer. Very good Pushpesh बेटा, you got it right in the first go. और बाकी सब ने भी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया, ठीक है. ओनली but then some of you were stuck in कुछ लोगों को ये दिक्कत हो गई कि सर लिमिटेशंस लिखूं कि लिमिट लिखूं, उसमें फंस गए. ठीक है, द आंसर इज सी. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. Okay, now next question. As Bangalore loses agricultural land to industry, several initiatives are trying to riddle a passion for farming and or gardening. बताओ. ट्वेल्थ संस्कृति. यस, जरा केयरफुल. पुष्पेश एंड रिचा एंड संस्कृति, जरा से एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो. रचित ऑल्सो रीड इट वंस मोर. Absolutely, the answer is P. Yes, only 2.
देखो यहां पर मैं यू नीड टू रीड दिस, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ोगे ना, इफ यू डोंट रीड दिस पार्ट देन यू विल गेट स्टक. To revive a passion for or rekindle a passion for. Okay, see, it says revive a passion or rekindle. We don't have any choice. Revive और rekindle का मतलब करीब करीब एक है. Revive का मतलब पुनर्जन्मित करना, माने to bring it back to life. Okay, and rekindle is to again ignite. Kindle का मतलब है जलाना, ठीक है. So reignite or revive, we don't really have a choice. ठीक है, दोबारा ठीक है. These two words don't matter much. These prepositions. Several initiatives are trying to rekindle a passion for. See, suppose we had for here also, then 1 and 2 both were correct. Okay, then and even this would be correct if you change this to are. Okay, several initiatives are trying to revive. See, if all of them had these kind of corrections, all the 3 would be correct. Okay, 1 is wrong because of the preposition. 3 is wrong because of the verb. Only 2 is correct. Not because of revive, rekindle or kindle. All the 3 words are correct. Okay, good. B is the correct answer. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. आज कुछ मजा आ रहा है मेरे को पढ़ा के कि I see at least some students in my class. Otherwise, people don't show up, and I feel as if मेरे को मन I was actually on the verge of saying कि भाई छोड़ दो मुझे, भाई I'm not going to take the classes. I was going to say that to my team, but then today, thank you all very much because you are here and you are making use of it, which is very nice. ठीक है. And don't worry. See, you can ask any question you want, any question related to English, of course. If you ask me a question about maths, I'll not know. GS, I'm not good at. Okay, so any question related to English, I'm there. Okay, and I told you all these years of experience सारा तुम्हारे सामने रख दूंगा. कैसे नहीं पास करते हो, एग्जाम कैसे नहीं क्रैक करते हो, करके रहेंगे. To the next one. Okay, so for any query you have regarding the session, regarding the ये क्या बोलते हैं कोर्स के बारे में कोई क्वेरी हो, व्हाट्सएप पे ये पूछ लेना, ठीक है. नहीं तो you want to call the numbers, these 2 numbers can be called. Learn idioms and phrases. I'm coming to that bit of Pushpesh. Ek second. Okay, and please do subscribe to the Telegram channel. Link is given in the description. Okay, now look at this. Phrases and clauses कैसे सीखा जाए? Phrases and idioms कैसे सीखा जाए? ठीक है. See, I am not somebody who advocates learning a list रटो. ये मैं नहीं बोलता. I don't believe in that theory. ठीक है. Very good beta, very good Pratham. Thank you Diksha beta. Welcome. See, all the teachers are very good. ये तो ये अच्छा ये सुन लो पहले phrases and idioms सीखा कैसे जाए, ठीक है. This is impossible, absolutely. Don't ever try to learn a list. पूरा लिस्ट रटने की कोशिश करोगे कभी जिंदगी में नहीं होगा. Vocabulary का भी सेम हाल है. Vocabulary, phrases and idioms, these cannot be learned by rote. आप चाहोगे कि भाई मैं 100 पन्ने का पूरा idioms पढ़ लूं, it's not going to happen. What we do instead is you get hold of a small list. I told you, you will get it in our own site. Gradeup के site पे ही अगर आप बोलोगे idioms and phrases, सुन लो उसके बाद बताता हूँ क्या करना है. Idioms and phrases PDF करोगे तो मिल जाएगा. इसमें बहुत ज्यादा होगा तो about 1000 idioms and phrases होंगे, बहुत है एग्जाम के लिए, ठीक है. लेकिन don't try to learn these 1000 idioms and phrases by rote. Don't try to cram, रटने की कोशिश मत करो. Okay, then what do I do? So then what is the list useful for? तो सुनो, एक बार तुम्हें क्या करना है, try to read the, suppose there are say 30 pages here, read the 30 pages once. एक बार पूरे फर्स्ट पेज से लेके 30th पेज तक जाना. डोंट स्टॉप इन द मिडल. दैट इज वंस यू हैव डन 1, आज कर लिया, कल सर 3, 4, 5 पढ़ लिया मैंने. आई रेड 3 पेजेस मोर. वेल, द नेक्स्ट डे you were able to do 2. Don't come back to the previous pages. No, just read through. Once you have read, okay, of the 1000, maybe you would be able to recall 50, but you will have seen 950. 50 याद आएगा, 950 देखा होगा, ठीक है. कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है कि अच्छा ये तो मैंने देखा तो है. आई कैन इवन गेस. ओके, आई कैन इवन
Guess. Wait, Pushpesh. Okay, 950 you have seen. Now once again, and keep doing the practice. Okay, practice where from? Practice mock tests. Keep taking the mock tests, or anywhere, whatever test you get. So if you have a book, start practicing from there. Now when you are practicing, some of the things you learned will come back to you. ठीक है, क्विज वगैरह करते रहो, कुछ कुछ याद आता रहेगा. ठीक है, तब भी वो 950 याद तो नहीं हुआ. Then once you have finished, say, the 1000 reading once, again start from the first page. Read it the second time. Read it the second time. You will see that you are able to recollect a lot many. Okay, because the comfort level has increased. Always remember, you have to be comfortable doing something, and then you start learning. It's not as if you start learning how to hit the ball as a straight drive. You will not be able to do it in one day. स्ट्रेट ड्राइव मारोगे इधर उधर, आपका ये लगता रहेगा, एज लगता रहेगा, फिर उसके बाद में एक बार लगता है, 100 बार में एक बार फर्स्ट क्लास स्ट्रेट ड्राइव हुआ. ठीक है, बट देन स्लोली, देन it comes to a place where every time you hit it, you can hit a good straight drive. आ जाता है. ठीक है, don't worry. Don't try to cram. Where to get the PDF of the same? From the website itself, beta. Gradeup के ऐप में आ जाओ. Search for idioms and phrases PDF. Idioms and phrases PDF. You will get one. ठीक है, करके देखना. And then you tell me. Try this method, and then you tell me whether it has worked for you or it has not. ESAT IHM Pune. Even I want to know this. Yes. Did you understand, beta? अच्छा, शाहबाज, welcome, beta, from Bihar. बहुत अच्छे. I had cleared IHM, was getting IHM Bangalore, but sir, ये IPMAT and IHM का difficulty level same होगा for verbal ability. Shall I use Arun Sharma's for? Yeah, absolutely, Diksha. You can use Arun Sharma's book. You can use. See, Arun Sharma is good. Mirror of Common Errors is good. Okay. Yeah, हाँ, पूछो बेटा, पूछ. Okay. सर एक्मे सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दीजिए. ठीक है बेटा, खुशी बोल देता हूं उसको. इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपके सारे क्लासेस हैं. हाँ है बेटा, रचित है. वेरी गुड प्रथम, योर क्लास 10 स्टूडेंट. नाउ इफ यू हैव स्टार्टेड दिस नाउ, तो बहुत आराम से कर लोगे. तो प्रथम, बाय द टाइम यू डू योर 12th, यू विल बी रेडी, मोर देन रेडी. ठीक है. हाँ बेटा शाहबाज, तुम बताओ, गया से आया हो, बताओ क्या किस चीज के लिए प्रिपेयर करोगे. ओके, ट्राई दिस ट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद बताना. आई हैव क्लियर्ड द NCH in city. ओके, एग्जाम विद AR 464. पुष्पेश, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कब होता है जानता हूं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, लेट मी टेल यू हाउ यू विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. ओके, हाउ डू वी डू इट? You take a mock test. Okay, we take a mock test and we try to get all the questions right. Sir, मैंने 50 ट्राई किया, 50 का 50 आया क्यों नहीं सर? I was able to do only 40. The issue is, man, your level of knowledge has not reached that till that place. Sometimes, okay, many newcomers, you will try 50 questions and get only 10 right. 40 will be wrong. So, are you going to take the exam today? No. These 40 questions are opportunities for learning. 40 अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो भाई. नंबर के बारे में क्यों सोच रहे हो? Why are you worrying about the numbers? Don't worry about the numbers. When you are taking a mock test, make sure that first of all you are going to learn as much as possible from those mock tests themselves. किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. अच्छा, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, I did not know this and I did not able to understand the explanation also. Note it down, ask me. Then you have learned the concept. Once you have learned the concept, you can go ahead. Okay, don't worry, don't ever think that a quiz has to be done 10 out of 10. If you have done one right, the person who has gotten only one right, he has got an opportunity to learn 9 different things. Okay, for the 12 o'clock batch, you want a WhatsApp group? Okay, I'll try to do that. And let's all get together. ठीक है, करते हैं GS क्लास. ओके बेटा, ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप कर देता हूँ, उसमें पूछना पड़ता है. ठीक है, कल देता हूँ तुमको.
Will our syllabus be over here on YT before IPMAT 2021? Diksha Bhedam, I'm not teaching you concepts on this one, YouTube. YouTube पे concept तो नहीं सिखा रहा हूँ. We are doing a lot of practice. That practice you will be doing a lot many different kinds of questions. Your second attempt, you will do well बेटा. कर लोगे शाबाश, कोई दिक्कत नहीं. इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बताना, I'll help you. Don't worry. GS में तो GS वाले सर से पूछ लेना, ठीक है? Okay, see you all in the next class बेटा. Bye bye. Okay, कल वाले क्लास में I'll try to create a WhatsApp group for all of you. Thank you very much बेटा. See, Sanskriti beta, why? See, it's like a give and take. If students come to my class, I get energy from you. I love to teach, okay? But then there are one or two students, and even they don't show up. Then you feel, what the heck am I doing here? There is no point, okay? It's all about a give and take. You press me, I'll come out with more, okay? You keep quiet, I won't be doing it because I feel you are not interested in the class. So why should I try throwing things at people who are not interested to receive it? समझ में आ रही बात? हाँ, we will do a lot many. देखो, अब मैंने पहले से ही बताया था, क्लास में आओगे, ठीक है, क्लास में आओगे तो या भाई स्पॉन्ज में जितना दबाव डालोगे उतना पानी छोड़ेगा. I am like a sponge, okay? You have to press me to take water out. ठीक है, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो फिर मैं कैसे अपने आप से क्या बोलूं कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं. इट्स नॉट टू शो माय नॉलेज, राइट? इट इज टू टीच यू थिंग्स व्हेन यू आर स्टक. ठीक है, बाय बाय. थैंक यू बेटा. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल वेरी मच. बाय बाय. गुड नाइट. गुड डे. सॉरी.